So hello students, welcome back to Deepak Sona Academy. This is amitan Patnaik. आज आम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट 1 आम फिजिक्स रो 2 and 3 मार्क्स रो क्वेश्चंस डिस्कशन करिया ओके जमती कि आम स्ट्रैटेजी वीडियो रे कथा हेतले जे आम अगर 2-3 मार्क्स रो क्वेश्चन को कवर करिया तो आज फास्ट आम फर्स्ट यूनिट जोटा कि तमरा होची इलेक्ट्रोस्टैटिक जोथरे कि तमरा आसुची कोन चार्ज चार्ज आसुची इलेक्ट्रिक फील्ड आसुची and potential and capacitance आसुची हमर फर्स्ट यूनिट भितरे ता रिलेटेड ही 2-3 मार्क्स रो क्वेश्चन को आज हम ए वीडियो रे कवर करिया आ जो क्वेश्चन गुडा एठी निया आइछि सोडा बेसिकली पीवाईक्यू ऊपर ही बेस करके निया आइछि जेमति कि यार एक्सपेक्टेंस तम परीक्षा रे आसीबार बहुत ही अधिक अटे सो एठी फर्स्ट क्वेश्चन देखिबा डिटरमाइन द magnitude and the direction of electric field that can balance a weight of an electron okay so से हमको पचाछि जे गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड नेबा जेमति कि सेथरे गोटे इलेक्ट्रॉन टे बैलेंस हेकी रहि पड़थो ओके सो हमें जानचे इलेक्ट्रिक फील्ड कोन ना फोर्स अपॉन चार्ज राइट एंड फोर्स कोन मास इनटू एक्सेलरेशन बट एठी एक्सेलरेशन जेतु केवल वेट कथा आछि एटी जेतु वेट कथा आछि तो एक्सेलरेशन केते एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और g तो एटी मास हमें केमति पकेबा E इज इक्वल टू mg बाय q ही जो ए रिलेशन रो हमको काढिबार अछि तो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एटी गिवन अछि 9 into 9.11 into 10 to the power minus 31 kg g रो वैल्यू दे देछि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और q चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दे देछि 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम सो एठी हमें ई फार्मूलाटा पुट कर दबा फार्मूला रे m जगह रे पके दबा हमें 9 into 10 to the power minus 31 into 10 divided by 1.6 into 10 to the power minus 19 तो एठी हमरा आजियो वैल्यू केते 5.7 into 10 to the power minus 10 न्यूटन पर कूलम ओके so next question हमर कोन अछि 3 capacitors of 2 microfarad 4 microfarad and 8 microfarad in series are connected to 12 volt energy find energy stored okay so हमें गोटे डायग्राम एठी करतबा हम कन्वीनियंस पई देछि जे कैपेसिटेंस गोडा कोथरे ना सीरीज रे कनेक्ट हेकी अछंदी तीनटा कैपेसिटर हमें सीरीज रे कनेक्ट करदबा एंड सेटा कनेक्ट हेछि गोटे 12 वोल्ट बैटरी सहित राइट तो हमें एठी एटा हि जो हमर 2 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड एंड 8 माइक्रोफैराड अब बैटरी रो पोटेंशियल केते देछि ना 12 वोल्ट सो हमें एठी जानछि जतले सीरीज रे अछंती तो हमें सीरीज रे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस काढिया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें सीरीज रे केमति काढितो ना CS इज इक्वल टू 1 by C1 plus 1 sorry 1 by CS is equal to 1 by C1 1 by C2 plus dot 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 जतिगडा थिबो सो सेही फार्मूलाटा हम एठी यूज करबा एठी केते हिजबा ना 1 by CS is equal to 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 तो 1 by CS हमर केते आछी एठी हमें LCM नै की करबा एमती 8 ही जो हमर डिनोमिनेटर 4 plus 2 plus 1 that is equal to 7 by 8 so CS हमर केते आस गेला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमर केते आस गेला 8 by 7 माइक्रोफैराड राइट एठी हमर ताको हमें कन्वर्ट कर दैछे डेसिमल ले 1.14 माइक्रोफैराड एनर्जी स्टोर्ड फार्मूला कोन हाफ CV स्क्वायर where C is capacitance and V is potential सेटा ही हमें पके दवा C जगह रे C रो वैल्यू एठी पड़ी गला एठी माइक्रोफैराड को हमें फैराड रे कन्वर्ट करछे सो एठी हमें कोन जानले 1 माइक्रोफैराड इज इक्वल टू 10 to the power minus 6 फैराड ओके एटा गोटे रिलेशन हमको मन रखिबार अछि तो एठी फैराड रे SI यूनिट रे कन्वर्ट करछे एंड वोल्ट हमर केते देछि 12 वोल्ट सो 12 रो स्क्वायर केते 144 एठी हमें कैलकुलेट करले हमरा आस जाउछि केते ना 82.3 माइक्रो जूल अर्थात 82.3 into 10 to the power 6 sorry 10 to the power minus 6 joule right and this is our answer जेतु हमर एठी किछि कहिनी केउ यूनिट रे लिखेबा तो हमें माइक्रो जूल रे भी लिखि परिबा किबा ताको जूल रे कन्वर्ट करि मध्ये लिखि परिबा नेक्स्ट हमर थर्ड क्वेश्चन कोन अछि ना कॉपर वायर एरिया दे देछि करंट दे देछि
and n टा हमर एटी कोन ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी which means कि गोटे मीटर क्यूब वॉल्यूम रे केतेटा इलेक्ट्रॉन अछंती राइट देन कैलकुलेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमर कोन ना average velocity attained by an electron inside a conductor okay drift velocity ताले हमर कोन हला ना average velocity attained by an electron inside a conductor so drift velocity रो हमर डायरेक्ट फार्मूला ही अछि vd is equal to 1 by sorry I by n a e हमर एक्चुअली फार्मूला टा जोटा कि हमर ओम्स लॉ रो आछि I is equal to n a vd e से थ्रू ही हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी रो फार्मूला पाई जिवा केते ना vd is equal to I by NAE, where N is the electron density, A is the area, and E is the charge of an electron. सेटा ही हमें पके दवा हमर तो करंट रो वैल्यू दे दी 1.6 नेक्स्ट हमर केते एरिया दे दी 2.5 into 10 to the power minus 6 and electron density दे 8 into 10 to the power 28 and one electron रो चार्ज हमें जान 1.6 into 10 to the power minus 19 so drift velocity हमर आसो 0.05 millimeter per second okay हमर एटा आसो आंसर 0.05 millimeter per second so next हमर अछि कोन ना the potential gradient at a point due to a 2 nc charge is 2 newton per coulomb calculate the distance of the point from the charge so एटा डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हमर एटी कोन देछि ना इलेक्ट्रिक फील्ड दे देछि इलेक्ट्रिक फील्ड केते देछि ना 2 न्यूटन पर कूलम and charge रो परिमाण केते देछि 2 nc that is equal to 2 into 10 to the power minus 9 coulomb so हमें जानछे कोन ना E is equal to kq by r square right and E is equal to minus dv by dx so हमरा आसीबो कोन ना 2 is equal to 9 into 10 to the power 9 into 2 into 10 to the power minus 9 divided by केते r रो स्क्वायर kq by r square फार्मूला रो एटा हमरा आस जाउची सिंपली हमर कोन हे जिवो ना r square को हमें एपटू आन देबा क्रॉस मल्टीप्लाई करी 2 को सेपट नै जिवो r square आस जिवो हमर 9 and r रो वैल्यू आस जिवो 3 मीटर राइट सिंपल जस्ट हमको फार्मूला मन रखले हमें करि देई परिबा the distance r is equal to 3 meter question 5 number find the expression for the capacitance of an isolated spherical conductor O with radius r okay तो हमको गोटे spherical isolated conductor टे एठी नै जिवा so एठी गोटे spherical isolated conductor नोचे जहार की radius होची r okay सो यार हमको कोन काढियार अछि ना एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस तो हमें जानछि मन कर एथरे q चार्ज रोची तो चार्ज टा कोन होबो ना कंडक्टर ऊपर एम्ति सरफेस रे ही रहिबो एठी हमको मन रखिर अछि जे कंडक्टर भितर दे कोनोसी प्रकार रा चार्ज फ्लो करे नाही सो हमें जानछि जे कोन ना v इज इक्वल टू kq by r where k is 1 by 4 pi epsilon naught and c is equal to q by v एठी हमें देखि परछो राइट c is equal to q by v and v is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into q by r so हमें एठी कोन करबा ना c पय हमको पछछि c रा एक्सप्रेशन लिखिया को so q जगह q रहइबो v रो वैल्यू हमें एठू पुट करबा so एटा हमर आसीबो 1 by 4 pi epsilon naught into q by r q q एठी each other cancel ही जवे 4 pi epsilon naught into r ही जो हमारा आंसर this is the expression for capacitance of an isolated spherical conductor so next question two point charges having a total charge q at distance x apart find the value of each charge
so that the force they exert on each other is maximum. So I mean जोड़े charge q1 and q2 ताको भितर distance होची x, then total charge होची q. So q1 plus q2 is equal to q. तो एठू हमर रिलेशन आसीबो q2 is equal to q minus q1, right? So आमे coulombs law रो force रो definition पाइचे केते ना 1 by 4 pi epsilon naught into q into q1 into q2 by r रो square, but एटी distance केते x अछि तो मु लिखि देबी x रो square. So हमर 1 by 4 pi epsilon naught into q2 जगह रे केते पके दबा ना q minus q1 by x रो square. एठी हमको गोटे रिलेशन मन रखिर अछि जेतबेले फॉर f max माने फोर्स ता जेतबेले मैक्सिमम मटे सेतबेले कोन ना df by dx सॉरी df by dq is equal to 0. ओके एठी हमें q1 रेस्पेक्टेड नोचे तो मु कोन लिखिबी ना df by dq1 लिखि देले is equal to 0 आसीबो. तो एटा को सॉल्व करले हमर केते आसीबो ना 1 by 4 pi epsilon naught हमर कांस्टेंट x स्क्वायर भी हमर गोटे कांस्टेंट ही की बाहर को पळे आसीबो कांस्टेंट और q टा को मु जदी भितरे गुणन कर देबी q1 टा को हमर आसीबो केते ना qq by q1 रो स्क्वायर is equal to 0, right? So एटी हमरो केते आसीबो ना q minus 2q differentiate कले q minus 2q is equal to 0. So q is equal to 2q 2q1. This is a relation. So q जदी हमरो 2q1 हला q2 हमरो केते हि जिवो ना 2q1 minus q1 is equal to q1. So एठी हमें कोन पाइले ना q1 is equal to q2, right? So एटा हम कोन दर्शोची ना जोडे चार्ज रो वैल्यू जदी समान हेबो ताहाले जाय कि हि ताको भितरे फोर्स ता मैक्सिमम हबो. ओके next question number कौन अछि ना two spheres of radius 1 centimeter and 2 centimeter have been charged with 1.5 into 10 to the power minus 8 coulomb and 1.5 into 10 to the power minus 7 coulomb respectively. If they are connected with a wire, will there be any charge flow? Explain. So हमें कौन जानछे ना जदी जोडे चार्ज रो असमान थाय कि जोडे स्फीयर को हमें कनेक्ट करबा ताले ताको भितरे चार्ज रो फ्लो केते बेले हबो ना when there is a potential difference, when there is a potential difference. जदि दि जनकर पोटेंशियल टा अलग अलग हितो ताहाले ही जाय कि चार्ज रो फ्लो हबो. ताहाले हमको एठी कोन करियर अछि ना सिंपली दीटा अगर हमें जदि पोटेंशियल काढी दबा आ हमें देखुचे जदि पोटेंशियल टा समान होची ताहाले या भीतर चार्ज फ्लो करबानी, जदि असमान होची ताहाले चार्ज फ्लो करबो. दैट इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो गिवन हमर डाटा गुडा एमती अछि ए जो सेंटीमीटर रे देछि ताको हमें मीटर रे कन्वर्ट कर दबा कारण एसआई यूनिट रे हमें सब करछे. तो v पोटेंशियल रो फार्मूला कोन 1 by 4 pi epsilon naught into q by r, right? q रो वैल्यू एटी पके दबा एंड r रो वैल्यू भी पके दबा. हमर वैल्यू आसी अछि v1 जदि स्फीयर 1 पे पोटेंशियल हुए v2 आ जदि सेकंड स्फीयर पे पोटेंशियल हुए हम एटी देखु जे दीटा को सेम अछि, right? v1 is equal to v2, so there is no potential difference, hence no charge flow occurs. Answer: no charge flow occurs as the potential of the two spheres are equal. जेतबेले इक्वल पोटेंशियल थिबो सेतबेले चार्ज रो फ्लो हेबो नाही, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर a network of three capacitors each of capacitance 2 microfarad is formed as shown in the figure. Calculate the resistance resultant capacitance between a and b. So a रो हमर करंट फ्लो करछि एंड b रे पहुंचुछि एसिके यांको भितरे कैपेसिटेंस केते हमको कैलकुलेट करियारे अछि. माने कर मु एटा को दे देबी c1 एटा हमर हि जो c2 and this is c3. So c1 और c2 कोथरे अछंती ना सीरीज रे अछंती, c1 and c2 सीरीज रे अछंती and c3 टा पैरेलल रे अछि, पैरेलली कनेक्ट हेछि. तो हमरो ए दीटा को मिसी की जो c1 और c2 रहला याकर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस केते हे जो ना cs is equal to 1 by 2 plus 1 by 2, right? हमरा एठी केते आसीबो ना 1 माइक्रोफैराड ही आसी जिवो. तो ए दीटा जको मिसी के टोटल हमरा आसी गला केते cs ना केते 1 माइक्रोफैराड.
देन ए जो 1 माइक्रोफाराड अछि और ए जो 2 माइक्रोफाराड अछि से दुटा हमर केमति अछंती ना पैरेलली कनेक्ट हिचंती पैरेलल कनेक्ट हितले सी टोटल हमर केते आसीबो ना CS प्लस C3 CS ର वैल्यू हमर केते आसी 1 माइक्रोफाराड प्लस C3 हमर केते 2 माइक्रोफाराड हेंस टोटल कैपेसिटेंस हमर केते आसीबो ना 3 माइक्रोफाराड राइट 3 माइक्रोफाराड a region next question hamara achi a region in an electric field is given by the potential function b x b is the function of x square plus b where v in volt x is in meters find out the units of a and b एटा एक्चुअली हमर 80 क्वेश्चन अछि किंतु क्वेश्चन टा हमर होची फर्स्ट ईयर रो यूनिट एंड डायमेंशन रो फर्स्ट ईयर फर्स्ट चैप्टर हमें जेतले यूनिट डायमेंशन पटले सेठी ही हमें यार क्वेश्चन हमें सॉल्व करिछे एठी हमर कोन दोची ना गोटे रिलेशन दोची vx ax स्क्वायर प्लस b राइट v रो हमर हमें जो रिलेशन ता पडतले कोन ना जदी हमें गोटे रिलेशन एमते लिखुचे गोटे इक्वेशन लिखुचे तले एपटल एलएचएस रो यूनिट जहा हबो और डायमेंशन जहा हबो आरएचएस रो यूनिट और डायमेंशन भी सेम हबा दरकार नहले हमर रिलेशन टी भूल अटे तले एठी हमें पोटेंशियल रो यूनिट कोन जानचे पोटेंशियल इज मेजर्ड इन वोल्ट सो ax स्क्वायर रो भी यूनिट ता कोन हबो ना वोल्ट हबो और b रो यूनिट ता भी वोल्ट ही हबो जेतु b एठु जणा पड़ जाउची त हमें कोन जानले b रो यूनिट होची वोल्ट बट vx सहित जेतोले a स्क्वायर को तुलना करा जाउची v रो यूनिट ही जाउची वोल्ट और a रो यूनिट हमको जणा नहीं x स्क्वायर हमर कोन देची ना इज इन मीटर्स तो x स्क्वायर रो यूनिट केते मीटर स्क्वायर ही जिवो तो a रो यूनिट हमर केते आसीबो ना वोल्ट पर मीटर स्क्वायर वेरी सिंपल क्वेश्चन फर्स्ट ईयर तमे जति भलसे पढथिबो ताले एटा तुमको कांसेप्टटा मने थिबो नेक्स्ट क्वेश्चन a spherical conductor placed on an insulating stand carries a charge of 0.7 coulomb and has a potential of 7000 volt calculates its capacitance in microfarad so हमको डायरेक्ट दे देची q is equal to 0.7 coulomb and v is equal to 7000 volt ओके तो हमें पोटेंशियल कैपेसिटेंस और चार्ज भितर रिलेशन कोन जानचे c is equal to q by v डायरेक्ट फार्मूला पकेगा 0.7 divided by 7000 इटू 77 कैंसिल हो 0.1 ऊपर अछि तळे अछि 1000 तो हमरा जो केते 10 टू द पावर -4 फैराड बट एठी हमरा कैपेसिटेंस रो यूनिट केते रे पछछि ना माइक्रो फैराड रे तो हमें कोन जानले 1 माइक्रो फैराड इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 फैराड सो हमें जदी इन्वर्स करके लेकिया 1 फैराड इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 फैराड राइट सॉरी 10 टू द पावर 6 माइक्रो फैराड तो हमर एठी आंसर केते आछि ना 10 टू द पावर -4 फैराड हमर आंसर आछि ताले ताको हमें जदी माइक्रो फैराड रे कन्वर्ट करिया केते आसीबो हमर 10 टू द पावर -4 फैराड इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 into 10 to the power 6 microfarad that is equal to 10 to the power 2 microfarad जोटा कि तमे 100 माइक्रोफैराड भी लिखि परिबो बट जेहेतु आमे गोटे स्टैंडर्ड साइंटिफिक वैल्यू लिखुचे स्टैंडर्ड साइंटिफिक न्यूमेरिकल वैल्यू लिखुचे तो 10 टू द पावर 2 टा माने 10 रो स्क्वायर लिखिवाटा हम पे बेटर हबो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन a 50 microfarad capacitor is connected to an AC circuit of frequency 50 Hz calculate the capacitive reactance of the circuit एटा हमरो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आउ हमरो एससी चैप्टर को मिसई के क्वेश्चन टा तयारी हेची तमे एम्ति कहि परिबनी फिजिक्स रे जे गोटे चैप्टर रो ही पर्टिकुलरली क्वेश्चन आसीबो क्वेश्चन टा तमने जोडे चैप्टर को इंटीग्रेट करके भी आसी पारे सो एठी हमरो एससी सहित इंटीग्रेट करके पक्कीची तो कैपेसिटेंस हमरो केते अछि ना 50 माइक्रोफैराड जोटा को हमें फैराड रे कन्वर्ट कर दवा जेतो हमें एसआई यूनिट को नै काम करिताउ फ्रीक्वेंसी हमरो केते f = 50 हर्ट्ज फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटिव रेजिस्टेंस हमें कोन जाचे xc होची हमर कैपेसिटिव रेजिस्टेंस सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस xc रा फॉर्मूला हमें कोन जाचे 1 by ओमेगा c ओमेगा रा वैल्यू हमें केते जानचे ओमेगा इज इक्वल टू 2 pi f where f is our frequency right 1 by 2 pi f c सो एठी हमें डायरेक्ट ही फॉर्मूला पके दवा और कोन अछि 2 into 3.14 into फ्रीक्वेंसी हमर दे दीची 50 एंड कैपेसिटेंस हमर केते अछि ना 50 माइक्रोफैराड
50 माइक्रोफारेड को आम कौन कर फारेड कन्वर्ट करछे तो आम केते लिखिया 50 into 10 to the power -6 कैपेसिटिव रिएक्टेंस रो हमर कोन यूनिट को अटे ना ओम तो हमर वैल्यू आसीबो एतिकी 63.30 ओम. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अच्छी 12 में इन एसआई यूनिट्स V माने कौन पोटेंशियल at a point in an electric field is given by V is equal to -6x plus 2 value of electric field in the field at 200 माने 200 माने कौन ना हमर जो स्टैंडर्ड स्पेस रोची xyz स्पेस এটা হচ্ছে আমরা xyz স্পেস x y z এটি আমাকে পচারছি 200 মানে এঠু ধর जोड़े এই পয়েন্টটারে আমার ইলেকট্রিক ফিল্ড কেতে হবো সেটা আমাকে পচারছি. ओके v is equal to -6x plus 2 दीजिए राइट हमें कौन जानिए e is equal to minus dv by dx where x is the distance next minus d by dx v जगह हमें v रो वैल्यू पके देबा -6x plus 2 so the answer will be 6 and electric field रो unit हमें केते जानिए न्यूटन पर कूलम. This will be our answer. Very easy question. So the next question is state Gauss law in electrostatics. This is a very important question. एटा एग्जाम रे बहुत तरह आसी आ आसवार संभावना सब बेले थाए. So Gauss law हमर कोन कहे Gauss law states that the total electric flux through a closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by the surface. एठी तमे कोन लिखिबो मैथमेटिकली जेतो हमें गोटे एक्सप्रेशन लिखुचे तो हमें तार मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टा को भी लिखिबा सेटा हम पे इंपोर्टेंट अटे. मैथमेटिकली कौन ना टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स is equal to through a closed surface is equal to 1 by epsilon naught into net charge. The total electric flux टा हमें केनते लिखिबा flux is equal to q by q enclosed by epsilon naught. This is the expression for Gauss law. Explanation कौन this means that the electric flux which represents the number of electric field lines passing through a surface depends directly on the charge inside the surface. Here epsilon naught is the permittivity of free space which measures the ability of material like vacuum to permit electric field lines to pass through it. So this was the Gauss law. Next question number is a charge of q coulomb passing through any section of a conductor as a function of time t is given by q is equal to 4t cube 2t square plus 3. Calculate the current at the end of 2 seconds. So हमें जानिए I is equal to dq by dt, right? So हमें इक्वेशन कौन जो d by dt of 4t cube plus 2t square plus 3. तो डेरिवेटिव कले हमारा आंसर केते आसो 12t square plus 4t, राइट? से हमको पचार से केते 2 सेकंड्स रे करंट केते I is equal to t is equal to 2 seconds रे. So t जगह हमें 2 पके देबा 12 into 4 plus 4 into 2 that is equal to 48 plus 8 that is equal to 56 ampere. Okay, this is our answer. The effective capacitance of two identical capacitors joined in series is 1 microfarad. Determine the capacitance of each. So हम कौन कोची ना जोड़े identical capacitor. Identical capacitor माने कौन ना same capacitance माने जोड़े capacitor जहाँ की capacitance टा same अटे. हमें गोटे सर्किट डायग्राम कर दवा for our convenience. जोड़े capacitor एठी नहीं जो जोटा कि सीरीज रे कनेक्ट हेछि पोटेंशियल कथा किसी देनी तथापि ड्र करछे जदी सेटा भी कर दो कोन देछि ना ए दीटा जो सीरीज रे जॉइन हेछि तांकर इफेक्टिव कैपेसिटेंस केते ना C इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड. ओके टू आइडेंटिकल कैपेसिटर माने करो मैं ए दीटा को C दे देबी तो सीरीज रे हमें फार्मूला कोन जाचे 1 by CF F माने इफेक्टिव पाई मु लिखुछि इज इक्वल टू 1 by C plus 1 by C, राइट? That is equal to 1 by 1 microfarad is equal to 2 by C, that is equal to C is equal to 2 microfarad.
वेरी इजी क्वेश्चन, एटा तमे चाहिले बहुत आराम से कर दे पारियो। नेक्स्ट हमर गोटे बढ़िया क्वेश्चन अछि जोटा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हमर बहुत टाइम आस्ता है, एटा जानिबा भी तम पे बहुत ही दरकार अटे। ना कोन ना मेटालिक चेन्स आर हंग टू बी ड्रैग डाउन ऑन ग्राउंड फ्रॉम बॉडी ऑफ ट्रक्स कैरिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल्स व्हाई। माने से हमको कौन कहूँ ना जो ट्रक गुड़ा बड़ बड़ ट्रक रे जो किसी इनफ्लेमेबल मटेरियल जाऊँगी मैंने जमी कौन प्रकार फुएल होगला कोईला होगला तुला होगला कटन बैंड्स होगला कटन जहाँ भी होगला जोटा कि सांगे सांगे निआटा धरदब इनफ्लेमेबल मटेरियल्स सेगुड़ा गला बेले कौन हुए ना ट्रक रु मेटाल चेन्स को टंगे दि जाए तल जाए माने ग्राउंड रे सेगुड़ा घोषाड़ी होकर जाए कौन ना मेटाल चेन्स गुड़ा कौन तार एक्सप्लेनेशन कौन ना व्हेन ए ट्रक मूव्स एट हाई स्पीड due to friction between the body of truck and air and between the tires and the road, the truck accumulates static electric charge। माने ट्रक टे जेतले मूव करछि गोटे हाई वेलोसिटी रे, मानकर एटा गोटे ट्रक है एटा जेतले गोटे हाई वेलोसिटी रे मूव करछि तले एयर जो याको रेजिस्टेंस दोछि जो गोटे फ्रिक्शन सृष्टि होछि एंड ए जो टायर मानकर रोड सहित जो फ्रिक्शन सृष्टि होछि ता फल कौन होछि ना ट्रक रे गोटे इलेक्ट्रिक चार्ज स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज सृष्टि होछि। दिस चार्ज कैन क्रिएट ए स्पार्क, राइट। ये चार्ज टा जो तैयारी होछि सेथरे गोटे स्पार्क हे पारे जोटा कि कोन करबो ना जदी किछि इनफ्लेमेबल मटेरियल रहला सेथरे निया धरिया को बहुत ही इजी हे जोता पई। तो कौन कराऊँ ना मेटालिक चेन गुड़ा को आम हैंग करछे रोड को लगे जमती कि से मेटालिक चेन कहीं दिया ना से चार्ज गुड़ा ये मेटालिक चेन देकी ग्राउंड को जाइबे आउ न्यूट्रलाइज हो जाए तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आउ सृष्टि हेनी आउ सृष्टि होची भी जदी ताले सेटा रोड रे जाई न्यूट्रलाइज हो जिवो। हेंस मेटालिक चेन्स टच द ग्राउंड allowing the charge to flow away safely preventing the build-up of dangerous static electricity। Hence, that is why metallic chains are used to discharge electricity safely to the ground। এটা ଗୋଟେ ଭଲ क्वेश्चन अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमरो a region in an electric field is specified by the relation E is equal to 4x square and electric field at the point x is equal to 2 located in the region find the electric field। এটা बहुत इजी क्वेश्चन हम गोटे कोन कला रिलेशन दे देला E is equal to 4x square where E is the electric field and x is equal to 2। बहुत ही सिंपल x जगह रे तारो वैल्यू ही पकेयार अछि 4 into 2 रो स्क्वायर that is equal to 4 into 4 that is 16 newton per coulomb, right। this was an easy question। हमर बहुत ही भलो क्वेश्चन है एटा जेई मेंस रे भी आस्ता है। ए चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप इज सस्पेंडेड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 20 27.5 into 10 to the power 4 volt per meter। एटी वोल्ट पर मीटर रे देछि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट so that neither it rises or nor falls। Find the charge on the drop given the mass of the drop is 9 into 10 to the power minus 15 kg। Neglect the air resistance। हम कोन कोछि ना गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड अछि एटी गोटे एमतिया इलेक्ट्रिक फील्ड रहिला जोथरे कि गोटे ऑयल ड्रॉप एटी गोटे ऑयल ड्रॉप रहउछि। ऑयल ड्रॉप टा कोन होछि ना एमति रहउछि ना नाइदर इट राइजेस नॉर इट फॉल्स। ए ऑयल ड्रॉप रो किछि गोटे चार्ज अछि मने करो q हमर ऑयल ड्रॉप टा ना ऊपर को जाउछि ना तळ को खसुछि माने गोटे इक्विलिब्रियम स्टेज रे आसी जाउछि and the mass of the oil drop is 9 into 10 to the power minus 15 kg। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू केते देला 27.5 into 10 to the power 4 वोल्ट पर मीटर मास केते दे देला ना 9 into 10 to the power minus 15 kg। सो जदि इलेक्ट्रिक फील्ड रे एटा रहिले एटा ना ऊपर जाउछि ना तळ को जाउछि ना एतरे जो फोर्स टा पडुछि सेटा दीटा फोर्स पडुछि से दीटा याको न्यूट्रलाइज करि दोछि। फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स हमर कोन ना गोटे फोर्स होछि ग्रेविटेशनल फोर्स that is Fg and another is electric field जो फोर्स टा पडुछि that is F is equal to electrostatic टा जोटा F is equal to QE। Fg टा वैल्यू हमें केते जानछे ना mg, राइट। हमर कोन ना Fe और Fg टा समान रहउछि बोली ऑयल ड्रॉप टा ना ऊपर को जाउछि ना तळ को खसुछि। सो हमको कोन करियार अछि ना सिंपली Fe और Fg को इक्वेट कर देले हमर आंसर आसी जिवो। सो इक्वेट केमति करिया QE is equal to mg, राइट। तापरे Q रो वैल्यू आउ सब वैल्यू हमर देई देछि Q रो वैल्यू पकै दबा Q रो वैल्यू देछि जा 9 into Q रो वैल्यू हमको एठी फाइंड करियार अछि, राइट। Q रो वैल्यू फाइंड करियार अछि
इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू दे देछि सो q into इलेक्ट्रिक फील्ड हमर केते देछि ना 227.5 into 10 to the power 4 volt per meter मास हमर अछि 9 into 10 to the power -5 and g रो वैल्यू को हमें एटी 10 नै जिवा so on calculation हमर केते आस जिवो ना q is equal to 3.2 into 10 to the power -19 coulomb हला एटा होछि चार्ज ऑन द ड्रॉप नेक्स्ट क्वेश्चन हमर स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट ए पॉइंट तो हमें जानछे इलेक्ट्रिक फील्ड ता कोन ना the electric field E at a point is given by the negative gradient of electric potential V at that point हम जानछे कोन E is equal to minus dV by dx सेटा ही हमकु फर्स्ट एक्सप्लेन करिक लिखियार अछि नेक्स्ट मैथमेटिकल फार्मूला टा हमर एटी लिखियार अछि where dV is the change in potential and dx is the distance over which the charge occurs answer कोन ना the electric field is the negative gradient of electric potential V बहुत तरह के क्वेश्चन आसे कोन ना पॉइंट आउट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स राइट सो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रो कोन they begin from positive charges and end on negative charges and they are not closed loops right समान जस्ट जानती इंते गोटे चार्ज रु आ गोटे चार्ज एट धर पॉजिटिव हला आ एठी नेगेटिव हला समान जस्ट जानती पॉजिटिव रु नेगेटिव को जानती इंते जानती ए माने कोनसी क्लोज लूप जानती नहीं on the other hand magnetic lines of force कोन ना they form closed loops right एटा तो गोटे बार मैग्नेट हला एटा नॉर्थ एटा साउथ पोल हला तो एठी कोन हबो ना नॉर्थ रु स्टार्ट हे की साउथ को जीवो एंड साउथ रु नॉर्थ को जीवो माने आउटर साइड रे नॉर्थ रु साउथ को जीवो इनर साइड रे साउथ रु नॉर्थ को जीवो कहीं लिख ले दे फॉर्म क्लोज्ड लूप्स गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू पोल north pole to south pole outside the magnet and south to north inside the magnet next they do not begin or end they are continuous and form closed curves माने कोन ना से माने कोठी भी गोटे एम्ति हठात आरंभ होंतिनी कि हठात शेष होंतिनी से माने गोटे कंटीन्यूअस लूप अटंती नेक्स्ट हमरो वेरी शॉर्ट आंसर्स जोटा कि हमरो 2 मार्क्स रे आस्ते प्राय टाइम very short answers with explanation okay so will any work be done in moving an electric charge q over the surface of an isolated charged metallic sphere ओटे metallic sphere ऊपर र metallic sphere रे जो surface टा रहउची एटा कोन ना गोटे equipotential surface इक्विपोटेंशियल सरफेस माने सेथरे हमें जति गोटे चार्ज को मूव करछे तो हमको कोनोसी वर्क डन करिवार पड़िबो नाही सो द आंसर इज नो वर्क इज डन will any work be done in moving charge plus q between 2 points on the surface of an isolated charged metallic sphere the same question with different language so no work done will be done because isolated charge surface of a sphere is an equipotential surface next question what is the unit of electric field intensity हमें कौन जाने इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज राइट सो फोर्स बाय चार्ज फोर्स रो यूनिट केते न्यूटन आ चार्ज रो यूनिट होची कूलम सेटा ही हम लिखले न्यूटन पर कूलम और डाइन पर स्टार्ट कूलम एटा हमरा सीजीएस यूनिट नेक्स्ट क्वेश्चन the potential of an equipotential surface is 10 volt how much work is done to move a charge of 2 microcoulomb on the surface through 10 centimeter it is an intelligent question से तुमको कोन ना एते डाटा दे देछि जे तमे बेसिक जिंसटा को हिंटी मिस करि जिवो एटी आगोरु ही से लिखि देछि ना इक्विपोटेंशियल सरफेस दैट इज द थिंग यू शुड लुक फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस देखुछ माने सेथरे चार्ज को मूव करिया पे कोनोसी प्रकार वर्क डन करबा को पड़िबो नाही किंतु तुमको जेहेतु एटी से गुडाई डाटा दे दोछि ना 10 वोल्ट दे दोछि एटी पुनी दे दोछि चार्ज वैल्यू दे दोछि तुमको लागिबो जे एटी किछि ना किछि ओडे हबो किंतु एटी किछि हबोनी द वर्क डन इज जीरो as the surface is equipotential surface जदि गोटे होउची ता ऊपरे चार्ज को गोटे स्थान रो आ गोटे स्थान को नेबा पई कोनोसी वर्क डन करबा को पड़े न थाए एटा हमको मन रखिबार अछि राइट एन इक्वेशन
Next question, write an equation relating farad, coulomb and volt. So farad आमे कौन जाने कैपेसिटेंस रो यूनिट, coulomb आमे जाने चार्ज रो यूनिट, राइट, और वोल्ट आमे जाने पोटेंशियल रो यूनिट, पोटेंशियल रो यूनिट. सो आमे चार्ज, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल भितर कौन रिलेशन जाने ना, चार्ज इज इक्वल टू, सॉरी, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू q by v. So farad is equal to coulomb per potential केते volt. एटा ही हमारा आंसर. Next, how is the electric field intensity at a point related to potential gradient there? सेठी हमें सेटा टिके लॉन्ग रे देखितले, एठी किंतु हमको 1 मार्क किबा 2 मार्क रे ही एटा आसीबो. कोन ना, electric field intensity is given as the negative potential gradient that is equal to E is equal to minus dV by dx. Next question, if electric field at a point is zero, can it have electric potential? Answer kono the simple kata, yes. Electric field intensity at the center of a line joining two equal charges of same sign is zero. एठी हमें बेसिक जिंस ही नहीं परिया ना, गोटे स्फीयर, स्फीयर भीतर देखी स्फीयर भितर कौन चार्ज एक्जिस्ट करी न थाए, स्फीयर ऊपर ही चार्जटा एक्जिस्ट करिता है, राइट. तो स्फीयर भितर इलेक्ट्रिक फील्ड केते ना जीरो, बट स्फीयर भितर पोटेंशियल थाए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्फीयर भितर कांस्टेंट अमाउंट रो थाए. सो it is possible that electric field at a point is zero, but it can have an electric potential. Next, define electron volt. This is a very important question at the market bahut time aspare, right. The electron volt is defined as the kinetic energy acquired when one electron of charge E is accelerated by a potential difference of 1 volt. Simple kata कोन ना, गोटे जदि इलेक्ट्रॉन जार की चार्ज होची E, सेटा जदि 1 वोल्ट रो पोटेंशियल डिफरेंस बाय एक्सीलरेटर होबो, ताकू ही हमें कहबा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नेक्स्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? एटा 1 मार्क क्वेश्चन है, एडी रहि जायछि. इलेक्ट्रिक चार्ज रो एसआई यूनिट कोन ना, कूलम. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटेड? सिंपल कथा कोन ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is equal to electric potential energy by charge, because we know electric potential टा हमर कोन, electric potential is the work done, right. Work done is simply the energy. So energy per charge gives our electric potential. Next question, an electric dipole is placed in an uniform electric field. What is the net electric force on it? जदि गोटे इलेक्ट्रिक डायपोल टे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड माने गोटे सॉरी टे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जदि होची, सेथरे जदि हमें गोटे इलेक्ट्रिक डायपोल को सिचुएट करछे रखुछे, ताले कोन ना, ता ऊपर कोनोसी प्रकार रो फोर्स पड़िबा नाही. हेंस नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डायपोल इज जीरो व्हेन इट इज प्लेस्ड इन an uniform electric field. Next question, to start with an electron is kept at rest in an uniform electric field, what trajectory will it follow thereafter? जदि हमें गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड रे गोटे इलेक्ट्रॉन रखि दोचे, माने माने करे एठी मु गोटे इलेक्ट्रॉन टे रखुची, ताले कोन करिवो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन जो आडी की ये इलेक्ट्रॉन टा साडी की ही मूव करिवो. जदि पॉजिटिव सॉरी जो आडी की नो, इलेक्ट्रॉन टा पॉजिटिव आड को ही मूव करिवो. ओके, सो ट्रैजेक्टरी कोन ना, स्ट्रेट लाइन along the field. Next question, what is the dimensional formula of electrical permittivity? Direct question, dimensional formula of electrical permittivity is m minus 1 l minus 3 t4 a square. जदि हठात तुमको परीक्षा रे मन न पड़ियो, तमे कोन करिवो ना, डायरेक्ट लिखियो f is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into q1 q2 by r square, right. एठी तमे q रो डायमेंशन जानछो, r रो डायमेंशन जानछो, 4 pi रो कोनोसी डायमेंशन नै, कारण एटा कांस्टेंट क्वांटिटी, और f रो भी डायमेंशन जानछो. एठू ही तमे एप्सिलॉन नॉट रो डायमेंशन टा कैलकुलेट करि पारियो. ता अपेक्षा तमे जदि मन रखि परछो, सेटा बेटर वे फॉर यू. केते ना m - 1 l - 3 t4th a square.
नेक्स्ट व्हाट इज एन आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल कौन ना गोटे कंडीशन इलेक्ट्रिक डाइपोल आम कौन जाचे ना गोटे पॉजिटिव चार्ज आ गोटे नेगेटिव चार्ज जेतेबेले गोटे कम स्पेस रे रहितांती गोटे कपल सृष्टि करथांती ताकू ही आम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोली कहथाउ जदि आमर कौन ना एमानकर जो चार्ज टा रोची जदि पॉजिटिव चार्ज टेंड्स टू इंफिनिटी and the distance between them मानकर r tends to zero माने बहुत अधिक परिमाण चार्ज बहुत ही कम स्पेस रे जदि रहउचंती मिसिकी ताकू ही हमें आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल कहबा ताकू ही हमें कोन लिखुच एक्सप्रेशन को ना an ideal electric dipole consists of two equal and opposite point charges situated very close to each other एटा इनकम्प्लीट अछि where charge is infinitely large charge is infinitely large and distance between the charges distance between the charges is infinitely infinitely small बुझी पारछो माने जदी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज रो जो वैल्यूटा कोन ना सेटा इन्फिनिटी जाय जाउथुओ और तांको भितरे जो डिस्टेंस टा रहइबो सेटा जीरो होथुओ माने जीरो को टेंड करथुओ ताहाले ही तामको हमें कोन कहबा ना आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल कंडीशन Next question. Three capacitors have capacitance 0.50, 0.30 and 0.20 microfarad. What is the joint capacitance when arranged to give a minimum capacitance? तो minimum टा हमें केमती काढिबा ना series रे रहिले ही हमरो minimum आसी जिवो. So 1 by Cs is equal to 1 by C1, 1 by C2 plus 1 by C3. C1 जगह रे value C1, C2, C3 जगह रे हमें value put कर दवा. That will come 31 by 3 CS is equal to 3 by 31 microfarad और 0.096 microfarad. एग्जाम रे जदि तुमको टाइम होनी ताले तमे डेसिमल रे कन्वर्ट न करी केवल एम्ति रैशनल नंबर ही लिखि पारिबो ओके बट यूनिट रो यूनिट टाको सबले नजर रे रखुथबो नेक्स्ट क्वेश्चन two charges 1 microcoulomb and 5 microcoulomb are placed 0.1 centimeter apart what is the ratio of the coulomb force acting on each of the two charges जदि गोटे चार्ज एठी रहउची q1 और q2 सेटा जे कोनोसी भी चार्ज हितो हमें कूलम्ब फोर्स q1 रेस्पेक्ट रे कोन k q1 q2 by r square राइट एंड q2 रेस्पेक्ट रे भी सेही k q1 q2 by r square एठी कोन ना फोर्स रो मैग्नीट्यूड ता समान रहिबो फोर्स विल हैव सेम मैग्नीट्यूड बट जदि जने पछची डायरेक्शन कथा तले q1 रो फोर्स ता पॉजिटिव एक्स एक्सिस रे जाउची और q2 रो फोर्स ता नेगेटिव एक्स एक्सिस रे जाउची so what do we know from that force will have same magnitude but the direction will be opposite for the opposite charges same जिंस हम लिखो जे फोर्स रो रेशियो ता केते 1:1 कारण सेम ही फोर्स ता since coulomb force on each other of two charges are equal in magnitude however opposite in direction माने magnitude is same opposite in the direction नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्ट्रैटेजी वीडियो रे मु कहितली जे लॉ गुडा बहुत ही इंपोर्टेंट देखो फर्स्ट हमरे गॉस लॉ आसला एबे कूलम्ब्स लॉ भी पळे आसला तो स्टेट कूलम्ब्स लॉ डायरेक्ट लिखिबो तमे इट स्टेट्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडीज is directly proportional to the product of charges and varies inversely as the square of the distance between two bodies 2 marks रे आस्तले तमे एमते लिखिबो एंड ता सहित कोन लिखिबो मैथमेटिकली because mathematical expression टा हमरो बहुत ही इंपोर्टेंट अटे कारण तमे थ्योरी पढले जते किछि भी करदबो मैथ्स टा न जानतले तमे किछि करि परिबो नाही सो कूलम्ब फोर्स टा हमरो केते मैथमेटिकली F is equal to K Q1 Q2 by R square where Q1 Q2 is the charges and R is the distance between the charges K रो वैल्यू भी तमे लिखि दबो जति आउरी बढ़िया इंप्रेस करियो पे 1 by 4 pi epsilon naught or 9 into 10 to the power minus 9 okay next 38 number a charge of plus q is given to a metallic sphere how much of it remains at the center एटा मु तुमको फास्ट रो ही कहछि
ना जेतेबेले गोटे स्पीयर को आम किसी चार्ज दू चार्जटा कौन हम ना ये जो स्पीयर सरफेस रे ही रही आउटर सरफेस रे ही रही कंडक्टिव स्फीयर हो नॉन कंडक्टिव स्फीयर हो तार सरफेस रे ही चार्जटा रही थाए ता भितर कौन चार्ज एक्जिस्ट करे नाही ता भितर से इलेक्ट्रिक फील्ड मध्य एक्जिस्ट करे नाही ओके सो द आंसर इज सी no charge will remain at the center rather they will spread over the surface right जते भी चार्ज आसु से केवल सरफेस ऊपर ही रही जिवे नेक्स्ट डिफाइन स्टार्ट कूलम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट कूलम इज डिफाइंड as the amount of charge when placed at a distance of 1 centimeter from an identical charge produces a force of 1 dyne right and with that our video is going to be ended so first आमे cover कले ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रो पाखापाखि सबू क्वेश्चन आमे 2-3 मार्क्स रो कवर करी देछे so that was the video subscribe to Deepak Suna Academy and do subscribe to Amitan Patnaik see you in the next video when we will be discussing about current and electricity goodbye take care